were solving the numericals of the chapter 3, motion and straight line. And also in today's lecture, we will solve some more numericals, remaining numericals of the chapter. So let's continue by the question number 3.12. See on the screen. 3.19. See the question. A ball is dropped from a height of 90 meters on a floor. At each collision with the floor, the ball loses 1/10 of its speed. Plot the speed time graph of its motion between t equals 0 to t 12 seconds. See the question here. There is a ball which is dropping freely from a height of 90 meters under gravity. When the ball is dropped from the height, then it comes under the gravity only. So for this motion, g will be 9.8 meter per second square. Means acceleration in this motion will be 9.8 meter per second square. And you know that when the ball is dropped from the height, its initial velocity is always 0. When it reaches the ground, it attains maximum velocity of its motion. So we have to draw the velocity time graph for the motion for the motion of this ball for the time interval 0 to 12 seconds. So we have to check the motion of the ball up to the 12 seconds, starting from this point. So let's see. क्या ये 12 सेकंड तक नीचे आएगा? No, it comes, then rebounds, again it comes, rebounds. Rebound means when it hits the ground, it goes in upward direction again. So ये जो motion होगा upward, downward. So for this type of motion, we have to analyze this motion up to the 12 second. Let's see here. So first part of the motion is vertically downward. When the ball is dropped from the height, it comes under gravity, vertically downward. So let's analyze this motion. U is 0, height is h is 90 meter, and g, suppose we are taking here 9.8 meter per second square. You can use the g equals to 10 meter per second square also. So to check the velocity, means to measure the time taken by the ball to reach to the ground, because we have to draw here the distance velocity time graph, so we have to check the velocity and time of the velocity at different moments. So let's see here the time taken by the ball to reach to the ground. So using the second equation of motion, h equals to ut plus half gt square. h it is 90, u 0 है तो ut equals 0 बना दिया. So finally half g is 9.8 and t square. We have to find this t. So finally t square equals to 90 to the 180 divided by 9.8, or it is equals to 180 100 divided by 98, or finally t equals to square root 1800 divided by 98. So by solving this ratio and square root of this ratio, you will get near about 4.3 seconds. Check कर लेना इसे. 4.3 seconds. So let's note down the time taken for the first part of the motion. It is downward. इस downward motion में कितना टाइम लगा ग्राउंड तक आने में? It is 4.3 seconds. Let's check the final velocity when it reaches the ground also. You can use the first equation of motion or third equation of motion to check the velocity when it reaches the ground. So v equals to u plus gt. V we have to measure here. U is 0,
G 9.8 and T we have solved, this is 4.3. So finally V equals to 9.8 multiplied by 4.3, it is near about 42 meter per second. चेक करें ना सॉल्व करके, 42 meter per second. So let's note down again, V equals to 42 meter per second. ये हुआ फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन. जब वो टॉप ऑफ 90 मीटर से ग्राउंड तक आया तो उसको टाइम लगा 4.3 सेकेंड एंड वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉल व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड इट इज 42 मीटर पर सेकेंड. अब क्या हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड इट लूजेस इट्स वेलोसिटी. कितनी वेलोसिटी लूज कर रहा है, तो कह रहा है इट्स 10th. किसका 10th? जो जिस वेलोसिटी से आके कोलाइड किया, दैट वेलोसिटी loses by its 10th. So for the next part of the motion, that is, भाई अब टकराने का क्या होगा, अब ये moves in upward direction. So for this second part, ये रहा first. Now in the second part of the motion, यहाँ भी इसकी initial velocity होगी. Let's calculate the initial velocity here. When the ball hits the ground, किस वेलोसिटी से हिट किया, 42 मीटर पर सेकेंड से. और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इट लूजेस इट्स वेलोसिटी बाय 1/10. सो इन द सेकेंड पार्ट ऑफ मोशन, दैट इज अपवर्ड, इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन दिस पार्ट व्हेन इट गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन, इन दिस पार्ट u विल बी 42 minus 1/10 of 42. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी 1/10 लूज कर जाएगी, तो जो बची वेलोसिटी है उसी से वो ऊपर जाएगा. सो 42 ये तो थी उसकी, एंड कितना कम हो गया, 1/10 of 42. सो इट इज 42 minus 4.2, near about 37.8 meter per second. So in the second part of the motion, that is upward, in upward motion, what is the initial velocity, 37.8 meter per second. Now let's check what is the time taken by the ball to reach its highest height. ये तो श्योर है कि ये अब हाईएस्ट हाइट 90 मीटर तक नहीं जाएगा, उससे कुछ कम जाएगा. Why? Because it loses its velocity. एनर्जी उसकी कुछ लॉस कर गई होगी in the collision of the ball with the ground. So let's check the time taken. Time taken you can calculate it by first equation of motion again, using first u equals to v equals to u plus minus gt na, in upward v. हाँ, you know that when it, suppose ये इस height तक पहुँचता है, so its final velocity will be 0 always. जब भी किसी ऑब्जेक्ट को you are throwing in upward direction, when it reaches the highest height, its velocity becomes 0 at that moment. So v equals to u minus gt. V is 0 here, u is 37.8 and this is 9.8 into t, or t equals to 37.8 divided by 9.8, and it is near about equals to, you can solve this value, it comes near about 3.9 second. This is near about 3.9 second. So time taken 3.9 second for the second part of the motion, that is in upward direction. अब देखो, ये चैप्टर ग्रेविटी में पढ़ा हुआ क्लास 9th में, कि when a ball is, या when an object is thrown in upward direction with certain velocity, then it goes to its highest height and returns back to the initial point and attains the same velocity, and time taken by the ball to reach its highest height will be equals to time taken by the ball to comes to the ground again. ध्यान सुनो, अगर किसी बॉल को 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर थ्रो किया और उसको हाईएस्ट हाइट तक जाने में सपोज लगा टाइम 2 सेकेंड, तो रिटर्न करेगा वापस उसी पॉइंट पे
कितना टाइम लगेगा रिटर्न करने में, सेम टाइम 2 सेकेंड, एंड जब वो रिटर्न करके अपनी इनिशियल पॉइंट पे आएगा तो इट अटेन्स द सेम वेलोसिटी जिस वेलोसिटी को फेंका गया था, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड इन दिस एग्जांपल. सो फॉर द थर्ड पार्ट, अब देखो अपवर्ड पहुंच गया, अपवर्ड पहुंचना फिर से वो डाउनवर्ड आएगा. सो लेट्स टेक द थर्ड पार्ट, दैट इज डाउनवर्ड अगेन. ये अपवर्ड डाउनवर्ड तक कब तक एनालिसिस करना है, चेक करना है, अप टू द 12 सेकेंड. It is given the question, we have to draw the velocity time graph for the time interval 0 to 12 सेकेंड. चेक करो कितना टाइम हुआ अभी तक. 4.3 सेकेंड डाउनवर्ड, 3.9 सेकेंड अपवर्ड. तो चेक करो 4, 3, 7 एंड 0.9, 0.3, 1.2 मीन्स 8.2 सेकेंड तक चेक कर लिया हम लोगों ने. अभी और चेक करना है, मीन्स 3.8 सेकेंड तक करीब और चेक करना है. So let's check for the third part, that is downward. तो जैसा भी बताया मैंने कि अगर इस बॉल को U से, U मीन्स कितना बना यहाँ पे 37.8 मीटर पर सेकेंड, 37.8 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया और जाने में कितना टाइम लगा हुआ है, सीन द रिजल्ट 3.9 सेकेंड. अगर यहाँ तक टी बना हुआ है 3.9 सेकेंड, तो रिटर्न भी करेगा वो 3.9 सेकेंड में ही. ये समझने की कोशिश कर रहे हैं. व्हेन यू आर थ्रोइंग द बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन, टी टाइम जाने में तो सेम टी टाइम रिटर्न करने में लगेगा, और जब वो रिटर्न करेगा तो सेम वेलोसिटी अटेन्स बाय द बॉल एज इट्स फाइनल वेलोसिटी. सो इन थर्ड पार्ट डाउनवर्ड मोशन, इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, क्योंकि डाउनवर्ड में फ्री फॉल मोशन, इनिशियल वेलोसिटी 0. फाइनल कितनी होगी 37.8 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम कितना लगेगा, सेम टाइम, दैट इज 3.9 सेकेंड. सो फाइनली वी हैव 3 पार्ट ऑफ द मोशन, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड. और चेक कर लो टाइम कितना यूटिलाइज हो गया, 4.3 प्लस 3.9, 8.2 and 8.2 plus 3.9 again, it is 12.1 सेकेंड. सो 12 तक पहुंच गए हम, यही कहना था. 12 सेकेंड तक चेक करके अब इसको ड्रॉ करना है. लेट्स ड्रॉ हियर. आई एम राइटिंग हियर अगेन. थर्ड पार्ट, U is 0, V is 37.8 meter per second and T equals to 3.9 seconds. अब स्पेस है, यहाँ ड्रॉ करें. वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इन दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो फर्स्ट पार्ट क्या है भाई, डाउनवर्ड मोशन. डाउनवर्ड मोशन मीन्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसी ग्राफ बनेगी, दैट इज स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड ऑन टाइम एक्सिस. तो सपोज ये बना स्ट्रेट लाइन, और फाइनल वेलोसिटी कितनी बनी थी देखो 42 मीटर पर सेकेंड. सो इट इज दिस पॉइंट, दिस इज 42. Suppose velocity in meter per second, so it is 42. और टाइम कितना लगा 4.3 सेकेंड. So time taken, this is, suppose it is in second, so this is 4.3. अब देखो in the second part में क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 37.8, मतलब loses by its 10th. तो देखो थोड़ा सा कम कर दो इस ग्राफ को, नीचे लेते आओ टू द पॉइंट ऑफ 37.8. तो ये हुआ 37.8 मीटर पर सेकेंड. अब फ्रॉम दिस पोजीशन अगेन इट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन. अपवर्ड डायरेक्शन भी क्या है, रिटार्डिंग मोशन है. रिटार्डेशन मोशन भी शोज द सेम स्ट्रेट लाइन कमिंग डाउनवर्ड. ऐसे कहाँ तक आएगा, जब तक कि वेलोसिटी उसकी 0 नहीं हो जाएगा. इन द सेकेंड पार्ट V is 0, इन अपवर्ड डायरेक्शन क्या होगी फाइनल वेलोसिटी
0. So this is 0, velocity 0, and time taken कितना time लग गया? 4.3 plus 3.9 more, that is 8.2. So it is 8.2. Now in the third part again, third part कैसा था? Downward again, downward means accelerated motion. फिर से accelerated motion ग्राफ बना, किस वेलोसिटी तक जाएगा? सेम वेलोसिटी 37.8 तक, एंड कितना टाइम लगा? 3.9 सेकेंड मोर, दैट इज टोटल टाइम कितना लग गया? 12.1 सेकेंड. टोटल चेक टाइम, टोटल टाइम 4.3 प्लस 3.9 प्लस 3.9, दैट इज 12.1 सेकेंड. ठीक है, so 12.1. So this is the graph, velocity time graph for this part of the motions from 0 to 12 seconds. Now see the next question, that is 3.18. See on the screen. Question is, a police van moving on a highway with a speed of 30 km per hour fires a bullet at the thief's car speeding away in the same direction with a speed of 192 km per hour. If the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, with what speed does the bullet hits the thief's car? See the question here. Here the velocity of the police van, it is, see the question, it is 30 km per hour. 30 km per hour. And the velocity of the bullet, it is 150 meter per second. And speed of velocity of the thief's car is 192 km per hour. Velocity of the thief is 192 km per hour. So we have to check here the velocity of the bullet when it hits the thief's car. It means we have to find here the relative velocity of bullet with respect to thief's car. ये निकालनी है. Relative velocity of bullet with respect to thief's car. इसका मतलब क्या होगा? थीफ कार को बुलेट की स्पीड किस स्पीड की लगेगी? दैट इज द VBT, relative velocity of bullet with respect to thief's car. So see here, when the first convert these two in meter per second also, because bullet speed is given in meter per second. So you can convert this 30 km per hour. See again here, VP equals to 30 multiplied by 5 by 18. 6 it earlier, 6 5 time, and 6 3, that is 25 by 3 meter per second. Similarly, VT is 192, again 5 by 18, and it is near about 160 divided by 3 meter per second. Now when the moving police van fires the bullet, then this moving police van assists the, means helps the velocity of the bullet. It increases the bullet velocity of the bullet here. जब भी कोई बॉडी मूविंग हो और मूविंग ऑब्जेक्ट से दूसरा एक बॉडी थ्रो किया जाए, तो द मूविंग बॉडी हेल्प्स द वेलोसिटी या इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ द थ्रोइंग ऑब्जेक्ट. रिपीटिंग अगेन, दौड़ते हुए अगर कोई प्लेयर है, दौड़ता हुआ प्लेयर अगर किसी बॉल को थ्रो करता है, तो वो जो रन करने की स्पीड रही होगी उस प्लेयर की, दैट स्पीड ऑल्सो हेल्प्स द स्पीड ऑफ द थ्रोइंग ऑब्जेक्ट. जैसे कि कोई बॉलर है इन द क्रिकेट, तो ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ द बिफोर थ्रोइंग द बॉल, व्हेन ही रन्स ऑन द ग्राउंड, दैट रनिंग स्पीड ऑल्सो हेल्प्स द स्पीड ऑफ द बॉल. So here also same case, police van
that is moving with 25 by 30 meter per second, and by this moving vehicle, moving police van, there is a bullet moves with 150 meter per second. So finally velocity of the bullet, या इसको लिख सकते हो इसको, that is acting velocity of the bullet, या resultant you can say, resultant velocity of the bullet will be equals to 150, तो बुलेट की स्पीड है, एंड प्लस पुलिस वैन की स्पीड, दैट इज 25 by 3 meter per second. So this will be the resultant velocity of the bullet, and velocity of the thief's car it is given. So now you can calculate VBT. ये VBT जब निकाल लोगे, VBT कैसे निकलेगी? When two bodies are motion in same direction, so relative velocity of bullet with respect to thief will be VB minus VT. This is VB and this is VT. जो लास्ट में VB लिखा हुआ था उसको स्मॉल कह देना, स्मॉल b equals to 150 meter per second. And now it is capital B, resultant velocity of the bullet, acting velocity of the bullet. So by this expression you can calculate the relative velocity of bullet which hits the thief's car. So these are the questions of the chapter number 3, motion in straight line. Other numericals, other questions you can try by yourself. And one more question is there. One student has asked this question. See the question. X equals to t square minus 6t plus 9. See the question. What is the question? It is question the displacement relation of a particle moving in one dimensional motion under the constant force is given by. See the question again. There is a question. The displacement of the particle moving under a constant force in one dimensional motion is given by x equals to t square minus 6t plus 9. So we have to find here three things. First, instantaneous velocity. Second, displacement when its velocity becomes 0. Two questions are there. क्या क्वेश्चन है? This is the displacement of the particle moving under constant force in a one-dimensional motion. So we have to find here the instantaneous velocity of the particle and displacement when its velocity becomes 0. See here. So we have to use here the calculus method. We know that this is the displacement, and for measuring the instantaneous velocity, it is dx dt. ddt of x, we should read here, ddt of x या dx upon dt भी बोल सकते हो. So we have to differentiate this term with respect to time. So let's differentiate d dt of क्या है x, t square minus 6t plus 9, और d इन तीनों में सेपरेटली वो डिफरेंशिएट करेगा. d dt of t square minus d dt of 6t and plus d dt of 9. One more step. Instantaneous velocity equals to, you know that differentiation of t square with respect to t, it is 2t. Differentiation का फॉर्मूला चेक करो. 2t minus 6t का differentiation it will be 6, because 6 constant होगा, वो बाहर आ गया, and differentiation of t with respect to t it is 1, so finally 6, and differentiation of a constant number it is 0, so 2t minus 6. This is the instantaneous velocity of the particle here. See the answer. First answer,
instantaneous velocity v equals to 2t minus 6. Now for this expression, you can calculate the velocity of the particle at any instant of time. Means t की वैल्यू 0 रखोगे, so you will get the instantaneous velocity at 0 second. When you will put the value of t for different values, with different values you will get the velocity at different values of time. So now second part of the question is, we have to find the displacement of the particle when its velocity is 0. See here, velocity 0 करो, when velocity is 0. When velocity is 0 means 0 equals to 2t minus 6 or t equals to 6 by 2, that is 3 second. इसका मतलब हुआ at third second means in 3 second it comes to rest. अब now check the displacement here. क्या है displacement relation? X equals to t square minus 6t plus 9. Now put the value of 3 second here to get the displacement at 3 second. So x equals to 3 square minus 6 into 3 plus 9. So x equals to 9 minus 18 plus 9. So find this here. Plus 9 plus 9 18 and minus 18, it is 0. इसका मतलब हुआ जब velocity इसकी 0 हुई, so displacement is also 0 here. So this is the whole about this today's lecture, and by tomorrow we will start the new chapter, chapter number 4, motion in a plane. And during the, I'm repeating again, during the revision session we will revise the chapter 1, 2, 3 all, and you can ask your doubts during the revision, or before revision also you can ask your doubts. And keep practicing for the numericals, solve numericals of the exercise also, and which we have solved here. Try to understand and try to solve by yourself also. So for today's lecture, thank you very much and God bless you. Keep learning.